बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we will cover part 2 of the installation of Oracle Forms and Reports 12C with database 12C release 1 in Windows 10 इंशाल्लाह। आज हम दूसरा हिस्सा मुकम्मल करेंगे Oracle Forms and Reports 12C की इंस्टॉलेशन डेटाबेस 12C रिलीज 1 के साथ Windows 10 में। So first we will cover this heading Fusion Middleware Configuration। पहले हम Fusion Middleware Configuration करेंगे। Now come to this path। अब हम इस पते पे जाएंगे Oracle common bin। common and bin। Now we will run config, which is Windows command script file with administrator rights। अब हम config की फाइल जो कि Windows command script है, इसकी टाइप उसको हम एडमिनिस्ट्रेटर की राइट से चलाएंगे। Now create option will be create a new domain, and domain location will be this path। However, you can define your own domain name instead of Omar Baig _ domain and then hit next button। अब हेडिंग जो है वो क्रिएट, ये ऑप्शन जो है क्रिएट ए न्यू डोमेन का रहेगा, और हम डोमेन लोकेशन जो है उसका पता ये होगा, और डोमेन नेम जो है वो उमर बेग _ डोमेन होगा। आप अपनी मर्जी से कुछ और डोमेन का नाम भी रख सकते हैं। नेक्स्ट का बटन दबाएं। नाउ ऑप्शन विल बी क्रिएट डोमेन यूजिंग प्रोडक्ट टेम्पलेट्स। अब ऑप्शन जो है वो क्रिएट डोमेन यूजिंग प्रोडक्ट टेम्पलेट्स रहेगा, एंड टेम्पलेट कैटेगरीज विल बी ऑल टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स की जो कैटेगरीज हैं वो तमाम टेम्पलेट्स रहेंगे। नाउ चेक ऑन Oracle रिपोर्ट सर्वर, Oracle रिपोर्ट ब्रिज, Oracle रिपोर्ट्स एप्लीकेशन 12.2.1। अब चेक करते हैं Oracle रिपोर्ट्स सर्वर, Oracle रिपोर्ट ब्रिज, Oracle रिपोर्ट्स एप्लीकेशन 12.2.1, Oracle रिपोर्ट्स एप्लीकेशन 12.2.1, Oracle रिपोर्ट्स टूल, Oracle HTTP सर्वर, Oracle रिपोर्ट्स टूल, Oracle HTTP server, and Oracle Forms 12.2.10 or Oracle Forms 12.2.10 or Oracle Enterprise Manager or Oracle Enterprise Manager. Hit next button. So now the option will be the option on which we have to check are Oracle Reports Server, Oracle Reports Bridge, Oracle Reports Application 12.2.1, Oracle Reports Tool 12.2.1, Oracle HTTP Server, Oracle Forms 12.2.1.20, Oracle Enterprise Manager।
अब जो जिन ऑप्शन पे हम चेक लगाएंगे वो ये होंगे: Oracle रिपोर्ट सर्वर, Oracle रिपोर्ट ब्रिज, Oracle रिपोर्ट्स एप्लीकेशन 12.1, Oracle रिपोर्ट्स टूल, Oracle HTTP सर्वर, Oracle फॉर्म्स 12.212, Oracle एंटरप्राइज मैनेजर। नेक्स्ट का बटन दबा दें, हिट नेक्स्ट बटन, दोबारा नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए। Now name will be weblogic, password and confirm password will be weblogic 123 respectively. Hit next button. अब नाम जो है वो weblogic रहेगा, पासवर्ड और confirm password weblogic 123 होगा। W जो है वो बड़ा होगा weblogic 123 का और hit next button, next का बटन दबा दें। The password and confirm password will be weblogic 123 and W will be capital in weblogic 123. Now option will be development and Oracle hotspot under domain mode and JDK respectively. Hit next button. ऑप्शन जो है वो डेवलपमेंट रहेगा डोमेन मोड के अंदर और Oracle हॉटस्पॉट 180_111 रहेगा JDK के अंदर। नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नाउ ऑप्शन विल बी RCU डेटा। अब ऑप्शन जो है वो RCU डेटा रहेगा। वेंडर विल बी Oracle, driver will be Oracle's driver, then DBMS/service will be ORCL12, host name will be localhost, port is 1521, schema owner will be dev_stb and schema password is Oracle. Hit get RCU configuration button. ऑप्शन जो है वो RCU डेटा का रहेगा, वेंडर Oracle रहेगा, ड्राइवर Oracle ड्राइवर्स थेन रहेगा, DBMS सर्विस ORCL12 रहेगी, होस्ट नेम लोकल होस्ट रहेगा, पोर्ट जो है वो 1521 रहेगी, स्कीमा ओनर dev_stb रहेगा और स्कीमा पासवर्ड Oracle रहेगा। गेट RCU कॉन्फ़िगरेशन का बटन दबा दें। माई सीड इज ORCL12 एंड पोर्ट इज 1521। मेरी सीट जो है वो ORCL12 है और पोर्ट जो है 1521 है। Now when successfully done appear, we will hit next button। जब कामयाबी से हो चुका है काम लिखा हुआ आ जाएगा तो हम नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। हिट नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट का बटन दबाएं। When test successful appear, hit next button। जब टेस्ट सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाए तो नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए। Now check on all option and then hit next button। तमाम ऑप्शंस पे चेक लगाएंगे और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। हिट नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए। Node manager type is per domain default location। ऑप्शन जो है वो पर डोमेन डिफॉल्ट लोकेशन का रहेगा नोड मैनेजर के टाइप के अंदर।
Now username will be weblogic, password and confirm password will be weblogic123 respectively under node manager credential, then hit next button. यूजरनेम जो है वो वेबलॉजिक रहेगा, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड वेबलॉजिक 123 रहेगा और वेबलॉजिक का W जो है वो बड़े हरुफ पे लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड विल बी वेबलॉजिक 123 and W will be capital in weblogic 123. Hit next button. Now hit next button. Seven times. अब हम नेक्स्ट का बटन दबाएंगे 7 दफा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, Now click on admin server beneath server heading and hit right arrow button and then hit next button. admin server के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो कि सर्वर के नीचे आ रहा है, राइट एरो का बटन दबाएंगे और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। Now hit next button again. अब दोबारा नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। Now click on plus add button, दो दफा नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। अब प्लस ऐड का बटन दबाएंगे। System component will be OHS1 and select OHS from component type drop down, then hit next button. System component जो है वो OHS1 रहेगा। OHS1 रहेगा और OHS को सेलेक्ट करेंगे कंपोनेंट टाइप के ड्रॉप डाउन से और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। Now system component is OHS1. System component जो है वो OHS1 रहेगा। Admin host will be 127.0.0.1. Admin host जो है वो 127.0.0.1 रहेगी। Admin port will be 4 times 7. Admin port जो है वो 4 दफा 7 रहेगी। Listen port will be 778. Listen port जो है वो 3 दफा 7 और 3 दफा 7 8 रहेगी। 3 दफा 7 और 1 दफा 8 रहेगी। 7 7 7 8। SSL listen port 443 रहेगी। SSL listen port 3 दफा 4 1 दफा 3 रहेगी। And server name will be look like this. सर्वर नेम जो है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। हिट नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट का बटन दबा दें। नाउ हिट नेक्स्ट बटन अगेन। अब दोबारा नेक्स्ट का बटन दबाएंगे।
Now click on OHS1 under System Component and hit right arrow button. आप OHS1 पे क्लिक करेंगे जो कि सिस्टम कंपोनेंट के अंदर आ रहा है और राइट एरो का बटन दबाएंगे, हिट नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट का बटन दबा दें। हिट नेक्स्ट बटन ट्वाइस, 2 दफा नेक्स्ट का बटन दबाएं। नाउ हिट क्रिएट बटन, अब क्रिएट का बटन दबा दीजिए। Now hit next button and then hit finish button। अब next का बटन दबाएंगे और अब finish का बटन दबाएंगे। Now we will cover this heading journal setting। अब हम journal setting करेंगे। Come to this path। अब हम इस पते पे जाएंगे। User project domain Omar Baig domain pin। User project domain Omar Baig domain and then bin। Now run start node manager Windows command script, which type is Windows command script with administrator rights। अब हम स्टार्ट नोड मैनेजर जिसकी टाइप जो है वो विंडोज कमांड स्क्रिप्ट है उसको हम चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। Now run start weblogic, which type is Windows command script with administrator rights। अब स्टार्ट वेब लॉजिक जिसकी टाइप जो है वो विंडोज कमांड स्क्रिप्ट है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियार से चलाएंगे। Now open Firefox and when running mode appear in this video we can access this URL। अब हम Firefox खोलेंगे और जब इस विंडो पे रनिंग मोड लिखा हुआ आ जाएगा तो हम इस पते को चला लेंगे। रनिंग मोड अपेयर, अब रनिंग मोड जो है वो लिखा हुआ आ गया, so we can access this URL। Now username is weblogic and password is weblogic123। then hit sign in button। यूजरनेम जो है वो वेबलॉजिक रहेगा, पासवर्ड जो है वो weblogic123 है और फिर हम साइन इन का बटन दबाएंगे।
hit sign in option, and now we have to run this URL as well. अब हम ये वाला URL भी चलाएंगे. Now we have to wait until it appears. In this we will provide a same credential name is weblogic, password is weblogic123 and then hit sign in button. नाम जो है वो weblogic रहेगा, पासवर्ड weblogic123 और फिर हम साइन इन का बटन दबाएंगे. It is already signed in, sorry. Now we'll remain in console and then click on domain structures in left side. अब हम कंसोल में रहेंगे और जो डोमेन स्ट्रक्चर है लेफ्ट साइड पे, उधर आएंगे. नेविगेट एनवायरनमेंट, एक्सपेंड इट एंड क्लिक ऑन सर्वर. एनवायरनमेंट पे आएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे और सर्वर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन सर्वर. नाउ वी विल क्लिक ऑन WLS फॉर्म. अब हम WLS फॉर्म पे क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन सर्वर स्टार्ट टैब, स्क्रॉल टिल एंड. सर्वर स्टार्ट के टैब पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे. नाउ प्रोवाइड यूजर नेम, password and confirm password and then hit save button. अब हम यूजर नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, कंफर्म पासवर्ड देंगे और सेव का बटन दबाएंगे. Password and confirm password will be weblogic123. Now hit save button. सेव का बटन दबा दें. Now click on servers on left pane, then click on WLS report. अब सर्वर्स पे क्लिक करेंगे जो कि हमारे उल्टी साइड पे है और फिर WLS रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे. Now repeat point I. अब हम अपना वही काम करेंगे जो हमने पॉइंट आई में किया था, यानी सर्वर स्टार्ट के टैब पे क्लिक करेंगे, नीचे तक जाएंगे, यूजर नेम देंगे, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे और फिर इसको सेव कर देंगे.
Now back to servers on left pane. अब हम सर्वर पे दोबारा आ जाएंगे. Now we will disconnect our internet connection. अब हम अपने इंटरनेट कनेक्शन को जो है वो डिस्कनेक्ट कर देंगे. Come to Enterprise Manager tab. Click on WLS form and hit Startup button. अब हम Enterprise Manager पे आ जाएंगे. WLS form पे क्लिक करेंगे और फिर स्टार्टअप का बटन दबाएंगे. Now when completed successfully appear, we will hit close button. जब यहाँ पे completed successfully लिखा हुआ आ जाएगा तो हम close का बटन दबा देंगे. Now hit close button. अब close का बटन दबाएंगे. Now click on Enterprise Manager on top along with Oracle. अब Enterprise Manager पे क्लिक करेंगे और जो Oracle के साथ है. Click on WLS report and hit startup button. WLS report पे क्लिक करेंगे और startup का बटन दबाएंगे. Now we will repeat. Point O. When completed successfully appear, hit close button. जब completed successfully लिखा हुआ आ जाएगा तो close का बटन दबा देंगे. Now hit close button. Close का बटन दबा दें. Click on target navigation in left pane. अब हम target navigation पे क्लिक करेंगे जो कि उल्टे हाथ पे है. Navigate to HTTP server. Expand it. HTTP server पे जाएंगे. उसको expand करेंगे. Click on OHS1. Hit startup button. OHS1 पे क्लिक करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे. And when completed successfully appear, hit close button. और जब completed successfully लिखा हुआ आ जाएगा तो close का बटन दबा देंगे. Hit close button. Close का बटन दबा दीजिए. Now create folder with the name forms 12C on desktop. अब हम एक फोल्डर बनाएंगे डेस्कटॉप पे forms 12C के नाम का. क्लिक ऑन विंडोज स्टार्ट बटन. विंडोज के स्टार्ट बटन को दबाएंगे. नेविगेट टू Oracle FMW 12C domain -Omar Baig. वहाँ चले जाएंगे Oracle FMW 12C. domain -Omar Baig पे expanded इसको खोलेंगे. Come to stop weblogic server. Right click on it. Stop weblogic server पे right click करेंगे. Come to more option. More पे आएंगे and click on open file location. Open file location पे क्लिक करेंगे.
Now copy start weblogic server dash WLS underscore form and stop weblogic server dash WLS form and paste it to folder form 12C. अब हम कॉपी करेंगे स्टार्ट वेबलॉजिक सर्वर और स्टॉप वेबलॉजिक सर्वर को और इसको यहाँ फॉर्म्स 12C में की फोल्डर में चस्पा कर देंगे. Now click on arrow button up to. एरो का बटन दबाएंगे up to का. Copy start node manager, stop node manager, start weblogic admin server and stop weblogic admin server and paste them to folder forms 12C. अब हम स्टार्ट नोड मैनेजर, स्टॉप नोड मैनेजर, स्टार्ट वेबलॉजिक एडमिन सर्वर और स्टॉप वेबलॉजिक एडमिन सर्वर इन चारों को कॉपी करेंगे और इसको चस्पा करेंगे फॉर्म्स 12C के फोल्डर में. Now open Oracle Forms Developer dash Forms folder. अब हम Oracle Forms Developer dash Forms 1 का फोल्डर खोलेंगे. Copy Form Builder icon and paste it to the desktop folder. Form Builder के आइकन को कॉपी करेंगे और इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देंगे. Now come to folder forms 12C. Copy start weblogic server dash WLS form and stop weblogic server dash WLS form and paste them and after that rename them as well. अब हम इस forms 12C के फोल्डर में आएंगे और यहाँ से स्टार्ट वेबलॉजिक सर्वर और स्टॉप वेबलॉजिक सर्वर को कॉपी करेंगे और इनको चस्पा कर देंगे. Now we will rename the newly created शॉर्टकट. अब हम इस न्यूली क्रिएटेड शॉर्टकट को रीनेम कर लेंगे. Now click on Start WLS report. Come to right click on Start WLS report. Come to Properties. Open it. अब हम Start WLS report पे राइट क्लिक करेंगे. प्रॉपर्टीज में जाएंगे, उसको खोल लेंगे. Come to target option under shortcut tab, press End button and rename WLS form to WLS report and then click on apply and then hit OK button. टारगेट एरिया में आएंगे, शॉर्टकट के टैब के अंदर WLS फॉर्म को तब्दील कर देंगे. WLS अंडरस्कोर फॉर्म्स को तब्दील कर देंगे WLS अंडरस्कोर रिपोर्ट्स
अप्लाई का बटन दबाएंगे और फिर ओके का बटन दबाएंगे। रिपीट पॉइंट ZD and ZE for stop WLS report। अब पॉइंट ZD और ZE को हम दोबारा दोहराएंगे स्टॉप WLS रिपोर्ट्स के लिए। Now rename start weblogic server dash WLS form and stop weblogic server dash WLS form to start WLS form and stop WLS form respectively। अब start weblogic server WLS form को और स्टॉप वेबलॉजिक सर्वर WLS फॉर्म को हम रीनेम कर लेंगे स्टार्ट WLS फॉर्म और स्टॉप WLS फॉर्म रिस्पेक्टिवली। के नाम से rename start weblogic admin server and stop weblogic admin server to start weblogic and stop weblogic respectively। अब नाम तब्दील कर देंगे start weblogic admin server और stop weblogic admin server का start weblogic और stop weblogic बिलतरतीब। So now this is the end of part 2. Part 3 will be available soon. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.